मिड सेम भी रहेगा अटेंडेंस और जो भी हो आप वो 30 मार्क्स। अटेंडेंस का तो हमारा कोई मार्किंग नहीं है, एमए में कोई ऐसा नहीं है। ओके। लेकिन प्रोटोकॉल्स का आई हैव सेड कि 5 मार्क्स फॉर प्रोटोकॉल्स। ओके। जो हम यहाँ करेंगे इंक्लूडिंग, मतलब दैट वुड बी इंक्लूडिंग योर क्लास परफॉर्मेंस एंड ऑल। एंड देन वी कैन हैव टू थिंग्स, वन असाइनमेंट एंड वन टेस्ट। दैट इज फॉर माय कोर्स। सब लोग, सब टीचर्स अपना अलग जो भी उनका हिसाब होगा वो तुम्हें बता देंगे। हम्म, हाँ सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, 5 ही रखो अभी। बट आई कैन चेंज इट बिकॉज आई रिमेंबर, मैं उस हिसाब से सोच रही थी कि बैचलर्स में वी हैव 25 मार्क्स। तो 10 + 10 + 5, बट यू हैव 30 मार्क्स। आई जस्ट सी कि किस तरीके से मैं आइन टाइमिंग करूंगी, ठीक है। बट उसमें से प्रोटोकॉल इज पार्ट ऑफ असेसमेंट, एंड देन यू हैव टेस्ट, एंड देन यू हैव असाइनमेंट। Okay, Suraj, du bist da als Protokollant vom letzten Unterricht, aber ist Himanshu auch da? Also will er kommen? Suraj? Yes, ma'am. Hello. हाँ हाँ, you were responsible for today's protocol, ना? Yes, ma'am. टुडे हाँ का तो भी, आज का भी। नहीं, आज का नहीं, रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस फॉर लास्ट क्लासेस प्रोटोकॉल विच यू नीड टू शेयर विद अस टुडे एंड आल्सो प्रेजेंट। Yes, ma'am. हाँ, you and Himanshu. So I was asking you whether Himanshu is going to be there or not, or whether he has also pitched in with you or not. मैम वो करेगा साथ में ही। अच्छा ठीक है। So when is he going to join? आई डोंट नो मैम। Could you ask him? ओके, आई विल आस्क। ठीक है। रंजन, आपको भी तो देनी है ना लास्ट, आपने शायद लास्ट टाइम प्रेजेंट नहीं की थी, आपने कहा था या या मैम। हाँ। हाँ तो डू यू वांट टू प्रेजेंट इट टुडे? या। हाँ तो परहैप्स वी कैन बिगिन विद यू एंड सी, जब तक अगर हिमांशु आ जाता है तो ठीक है। ओके। ठीक है। Yes, we can see the protocol. Hmm. ओके। Hauptthema: Das Gedicht Höre Israel von Erich Fried. Erich Fried war ein österreichisch-geborener Dichter, Schriftsteller und Übersetzer. Wir haben den Unterricht mit seiner eigenen Rezension des Höre Israel angefangen. Das Gedicht wurde von ihm im Jahre 1974 verfasst. In dem Gedicht geht es It's not visible anymore. Okay, now it's visible again. geht es das Konflikt von Israel und Palästina. Es ist ein politischer Gedicht. Das Gedicht besteht aus 6 Strophen. Jede Strophe hat 4 Verse. Es gibt kein bestimmtes Reimschema. Wir haben einzelne Verse und deren Ausdrücke, Begriffe analysiert und verstanden.
Was war Dichter da Durst vermitteln wollte. Die Gästen davon sehen. In diesem Gedicht verlässt die Handlungen der israelischen Leute zu denen der Nazis. Meint, dass die Israelier die selber Juden waren und von den Nazis verfolgt wurden, machen jetzt das Gleiche zu den Palästinenser und nennt sie jetzt als die Verfolger. Begriffe wie Sündenbock, nackte Füße weisen auf die Gräuel Gräueltaten der Nazis hin. Die Juden haben wegen dieser Gräueltaten gelitten. Und jetzt, obwohl es keine Nazis mehr gibt, überlebt ihr Grausamkeit in den Taten der Juden in Israel. Israel hat gegen Palästinien nur wegen ihrer militärischen Macht gewonnen und obwohl die Spuren der Bomben und Panzer nicht zu finden sind, wird der Eindruck eher Ungerechtigkeit immer im Gedächtnis denn geschlagen bleiben. Thank you, ma'am. Okay, danke. Wollen die anderen, danke für dieses Protokoll, wollen die anderen etwas hinzufügen? एक बार इसको share करते रहो, if it is possible, so that others can just give it some time and add something. What did you mean when you said das Gedicht wurde von ihm im Jahr 1974 verpasst? Meinst du veröffentlicht? Ah. ठीक है, मतलब verpassen, perhaps you meant veröffentlicht, no? Yeah. Okay, but what about the points? एक तो मतलब बस मैं स्टिलिस्टिक बात कर रही हूँ, कुछ चीजें हैं जो कि एक सेकंड, what is happening here? I hope I'm still audible. ठीक है, Yeah. हाँ, so छोटे छोटे जो मिस्टेक्स है ना, although मतलब I had said earlier कि we are going to focus more on the in-heart, but there are some avoidable mistakes like बंद हो गया फिर से, जैसे कि आई थिंक कहीं पर तुमने पुंक्त के बाद शॉर्ट में लिखा हुआ है आई कैप, मतलब थोड़ा सा आई कैपिटल होना चाहिए कहीं पर और स्पेस होनी चाहिए पुंक्त के बाद, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देना अपलोड करने से पहले. Okay, ma'am. ठीक है, लेकिन कमिंग टू द इन हार्ट, थोड़ा सा ग्रामर का भी थोड़ा एक बार गो थ्रू करके उसको फाइनल करेक्शन के बाद ही अपलोड करना, बट लेट्स कम बैक टू द इन हार्ट. Wollen die anderen etwas hinzufügen oder ist das komplett? Haben wir noch was besprochen, was vielleicht in diesem Protokoll nicht gibt, was er dann nochmals hinzufügen kann? Wir haben auch diskutiert, ne, कि Lastenfuse als Metapher. Und es gibt auch bestimmte Themen, like Sündenbock. हाँ, ठीक है. So yeah, correct. मतलब if you, मतलब what Sumit is also trying to say is कि although you have written about कि किस तरीके से there is this parallel जो CN किया गया है between what happened with Israelis and what Nazis did to them and what Israelis are doing, not Israelis, sorry, Juden, ठीक है, and what Israelis are doing with the Palestinian. So there is a parallel, but how is this parallel reflected in the poem? There you had some recurring historisch beladene Begriffe, die als Metapher verstanden werden können, ne? जैसे कि तुम्हारा Sündenbock है, which is not, मतलब which can only semantically तो वो parallel ऐसे create हो रहा है ना, तुम्हारा Sündenbock है दूसरी कुछ जगहों पर है,
जैसे द वर्ड Verfolger के ऊपर जो emphasis है, ठीक है, एक तो ये point है which you could add. Auch मैम es hat nicht like Jugend gleich beschreiben. Das Dichter hat das vergleichen mit dem Nazis Zeit. He's not like mentioned directly they were Jews. हाँ, Indirectly. Namenslosigkeit. हाँ, ठीक है, so diese Namenlosigkeit ist auch eine Sache तुम्हारा, कि and through that and we also discussed why do you think, yeah, what does it add to, what effect does it create, कि मतलब your religions are not mentioned, yeah, even Palestine is not mentioned, only in the title you have Israel, but apart from that deliberately any identity is not referred to. We discussed about it कि क्यों है ऐसा, है ना? हाँ, so this is another point I also remember. Is there anything else? So we have these 2 points. I think that is all, no? मतलब those 2 important points can be part. You can include them in your. Also there were like personal pronoun, but it will come under like Gettys के form में कि rhyme से अच्छा, हाँ, stimmt, ठीक है. Yeah. Not rhyme schema, but your thus instead of this Structure of the Lyricist poem. ish, because we did a little bit of a gleich with the other poem, जिसमें तुम्हारा es gibt kein lyrisches Ich, sondern lyrische Wir. But in this case, it starts with Wir, but es gibt eine Trennung und es wird zu Du. Na, ihr, Entschuldigung, not Du, ihr. So es gibt diese Trennung zwischen dem Sprecher / Dichter und मतलब एक टुगेदरनेस से एक सेल्फस्प्लिटरिंग हो रही है. दैट सेल्फस्प्लिटरिंग की जब तक तो तुम Verfolgt थे, आई वाज विद यू, बट नाउ दैट यू हैव बिकम zum Verfolger, वो तुम्हारी Trennung उसमें भी आ रही है कि ईयर ईयर ईयर, ठीक है. द होल पोएम इज नॉट lyrisches Ich oder lyrische Wir, sondern ईयर. तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट. Danke. Okay. ठीक है. Noch was? Okay, alles klar. Then perhaps you can make these changes and then upload it directly on our Google Classroom. ठीक है? Ja. Ja, ठीक है. Vielen Dank. Jetzt ist auch Himanshu da und wir können mit unserem zweiten Protokoll anfangen. Wer von euch möchte das teilen? Ma'am, actually, Suraj and I have like still in progress in completing that. So Sure. we can be present in next class. ठीक है. Okay. Actually, the play is like bit tricky at times, so we were just wondering, so to get some more time for it, specifically for this only, like for the next class. ठीक है. अब since you have not prepared it, you can get more time, but I'm pretty sure it's not because play is tricky because you're not supposed to interpret it per protocol. हाँ, you are just supposed to read a game जो हमने डिस्कस किया. और लास्ट टाइम तो हमने बस आई थिंक कुछ ही चीजें डिस्कस की थी ना. यू कुड हैव गिवन इट अ ट्राई, बट ओके, आई अंडरस्टैंड दिस आल्सो के nur 2 Tage sind vergangen inzwischen, ne? Das ist auch wenig Zeit. ठीक है. So perhaps we can discuss this protocol in our next class, but लेकिन please don't make it into a वो ना, जैसे कि last 2 times से ट्रेडिशन बन गया है कि हम डिले ना करते चले जाएं हर बार. No, ma'am, not at all. ठीक Just है. for this. Okay. Also, dann können wir zusammen das wiederholen, was wir in unserem letzten Unterricht gemacht haben, ne, bevor wir weitergehen. Was haben wir besprochen? Oder vielleicht könnt ihr wenigstens diese Verantwortung nehmen, dass ihr das mündlich wiedergibt, selbst wenn ihr das nicht so schriftlich verfasst habt. Huh, Himanshu and Suraj. Huh? Perhaps you can simply tell us what did we do in our last class. Mündlich. Sind alle da? Habt ihr Ja, mich ja. gehört? Okay. ठीक है, die Frage, also normalerweise stelle ich diese Frage an allen, लेकिन diesmal können wir mit euch anfangen, कि was haben wir letztes Mal gemacht? Womit haben wir angefangen? Was habt ihr in Erinnerung aus diesem Unterricht? Ja? मैम
ट्रूमैन इंडियनाक जो बेर्टोल्ट ब्रेस्ट ने हम्म लिखा है, जो 1922 में, ये सब हम लोग पढ़े हैं कि पिछले क्लास में, कि 1922 में वो पहली बार प्रेजेंट हुआ है थिएटर में। या और उसमें कुछ कैरेक्टर्स के नाम, कुछ जो कैरेक्टर्स थे उनके नाम बताए थे कि कौन कौन है। जैसे अना है, अना बालिका जो कि अना बालिका की वाइफ है, बालिका फ्राउ। और उसमें फिर आंद्रियस है जो कि वो फिर प्रेमिका है, अति क्या बोलते हैं उसको, लवर है मैम अना का। एंड और मुर्का है जो एक इंडस्ट्रियल, जो क्या बोलते हैं, उद्योगपति लोग आदमी है, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रोथ कर रहा था, बढ़ा रहा था, पैसे वाला था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के कारण एंड्रियस जो है, जो चला जाता है युद्ध में, और उसके 4 साल तक उसका कोई खबर नहीं होता है, उसका क्या हुआ नहीं हुआ। और उस दौरान इसके घर वाले भी कहते हैं अना को कि चलो अब काफी टाइम हो गया, वो आएगा नहीं आएगा, तो शादी कर लो मूर्ख से। और फिर निश्चय मूर्ख जो फिर वो मान जाती है, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था। फिर वो 4 साल बाद वापिस आता है, जो कि वो अफ्रीका में प्रिजनर के तौर पे रहता है वहाँ पे। फिर वो वापिस आता है। और मैम इतना ही सब कुछ हुआ था। So we discussed the first act, okay? Vielen Dank. Yes. Also, dass wir diesen Stück von Bertolt Brecht besprochen haben, das ist ich glaube, sein erstes Stück. Und wir haben auch besprochen, dass es irgendwie also direkt nach oder auch während, kann man sagen, während des Expressionismus geschrieben worden ist. Deswegen hat es so irgendwelche, also es ist als eine Mischung zu sehen. Also es gibt expressionistische Elemente, aber auch Elemente seiner eigenen Form, die später als episches Theater berühmt wurde. Ne? Das Bertolt Brecht, wofür ist er bekannt? Haben wir auch besprochen. Er ist ein politischer Dichter, Dramatiker und Schriftsteller, Bertolt Brecht. मैं सब कुछ रिपीट नहीं करी कि wann wurde er geboren. Also hoffentlich könnt ihr auch also dieses Blatt sehen hier, auf meinem Bildschirm. But what is he known for? That it's Stucker, जो भी है सारे are mostly politically pointed, and that he is not a fan of catharsis and emotional attachment, but he uses Verfremdungseffekte, and he writes also mostly comedies and all. ठीक है, और एपिशस थिएटर के बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, again not going into detail, and this point came from you ना कि this particular story जो तुमने बोला कि तुम्हारा ये सब जो themes हैं उसमें whatever you just zusammenfassen किया है, aber es gibt also Comedy spielt hier auch eine Rolle. Es wird nicht so kathartisch dargestellt, nicht so melodramatisch, teilweise doch melodramatisch dargestellt, aber Comedy spielt hier auch eine Rolle. Wie, das haben wir auch besprochen. Ihr habt diesen auch nochmals gelesen und wir haben festgestellt, welche Strategien verwendet worden sind, um diese anscheinend, ja, जो भी है, sich einerseits gibt es diese Entfaltung von Melodrama, aber das wird so abrupt zu Ende gebracht irgendwie. manchmal durch, ठीक है, perhaps you can pitch in कि क्या क्या और डिस्कस किया था कि what are the major strategy, how does it look like. सूरज ने तो बता दिया कि क्या क्या मतलब इनहार्टलिश क्या क्या हो रहा है फर्स्ट एक्ट में, that you have these characters जो कि बिल्डशर्म पे नजर आ रहे हैं ये, ठीक है. Your protagonist is obviously Andreas Kragler, ein Soldat, der nach dem Ersten Weltkrieg nach Hause kehrt. Der ist Kriegsheimkehrer. Der Kriegsheimkehrer. Und will jetzt wieder zusammen sein mit Anna Baleka, die ihre Geliebte ist. Aber sie ist im Moment mit Friedrich zusammen, der, wie du gesagt hast, ein Industrialist ist oder zu der Klasse Bourgeoisie gehört, wie die anderen Baliken auch. Okay, we have Anna Balika, Karl and Amalie Balika, die Eltern.
We have Friedrich Murk, अभी बात कर लिया, Babusch, noch eine Figur, der Journalist ist. Und es gibt auch Dienstmädchen. Was haben wir noch besprochen, bevor wir weitergehen? There is a, for example, like to get the Verfremdungseffekt, there is a Unheimlichkeit zwischen, in between the body language versus the tone. Yeah. ठीक है. Do you have a cat in your? Yeah, yeah, that's my cat. Okay. ठीक है. So yeah, correct. There is this Unheimlichkeit. This is one of the strategies used in some of the places. Not all. It's not throughout. First of all, the first thing that we notice is that there is no Einheitlichkeit even in the tone of the text. Right? Sometimes it's getting a little serious, and suddenly that seriousness is disrupted. Sometimes it's simply funny. And one of the things that you are pointing out, जैसे कि especially that father daughter जो एक सीन था जिसमें she is sitting on his lap like a little child, but the things that they are talking about are different. ठीक है, तो there is this Unheimlichkeit and it adds to that Verfremdungseffekt. Okay, gut. Was noch? Even Anna's character, no consistency in that. Like one side she says that she loves him and she's waiting for him, but they're showing that she is also sexually with this other man, with more. But just to clarify, which was also discussed last time, it's not about this Not fact her character. कि क्या कहते हैं, हाँ exactly कि although she is in love with him but he's making out, या मतलब he's in a sexual relationship with Murk, ठीक है, that is not the inconsistency, that is pretty realistic also, but inconsistency in The kind of stories that usually they show. No? yeah, perhaps the character, because we have to also understand character of a play, matlab, as distinct from a person who might do obviously this and that, या कभी कुछ हम कौन सा लाइफ में कंसिस्टेंटली वो करते हैं, ठीक है, but a character in the sense कि usually plays में during that time, obviously Brecht और उसके बाद तो a lot of changes have happened, but one character if depicted that woeful, woe stricken dama, ठीक है, who is like a suffering, वो सफरिंग वाली चीज कंसिस्टेंटली टोन में नहीं है, दैट इज ऑल्सो गेटिंग डिसरप्टेड कि एट टाइम्स शी इज गेट बिकमिंग दैट, जैसे कि आई एम pretty sure or and hope that you have read the 3 acts, the third act as well, that there you see seriousness in your character. ऐसा नहीं है कि there is no seriousness, but at least in the first act that seriousness is disrupted here and there. Not character as if कैसी बंदी है वो वाली बात नहीं है, but किस तरीके से कैरेक्टराइजेशन की गई है और वो कैरेक्टराइजेशन किस टोन में पोर्ट्रे की जा रही है, उसमें इनकंसिस्टेंसी है, या रिश्तेश, और ऑब्वियसली मतलब वो भी चीज गलत नहीं है जो तुम कह रहे हो कि आई मीन शी इज एक्टिंग लाइक दिस श्वांकन जो कर रही है हिनून हेयर, ठीक है, मतलब एटलीस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम इट दिस इज ऑल्सो डेलिबरेट चॉइस, not necessarily because you have to understand कि Brecht is not a conservative in that, but we wouldn't see such things as negative, okay, but yes, it like breaks with the older traditions where you have एक तो बूर्जुआ में कैरेक्टर दिखाते हैं ना, मतलब जो ब्यूर्गरलिशे Trauer के वो आउटक्लियरिंग देते हैं, बट जो ब्यूर्गरलिशे Trauer स्पील जो इससे पहले चलते आ रहे थे कि ब्यूर्गरटूम इक्वल्स मोरालिटी, ठीक है, वो वाली चीज को कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा रहा है यहाँ पे. Okay. Noch was? Also über die Sprache haben wir auch gesprochen. Was für eine Sprache gibt es hier? Einfach und Alltagssprache. Einfach und Alltagssprache. Noch etwas? Vulgarity in the ja, genau. ठीक है, das obszön या vulgäre Sprache. Okay. Gut. ठीक है, which is okay, which is also that it adds to the shock element, ना, it's not the same kind of shock. और क्या बात की थी हमने, something that we might be forgetting? vielleicht character Eigenschaft. हाँ वो तो हम, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, उस पर हम अभी ज्यादा दोबारा बात नहीं करेंगे, बट यू आर राइट, कैरेक्टर एंड आइगनशाफ्टन के बारे में बात की थी,
तो कुछ और आ गया, सॉरी। ठीक है, बट ऑल्सो अबाउट द सेटिंग, बिकॉज we started with Inhart, but we then went back to seeing कि this is a shtuk after all, which is 4 की तरह आकर, लेकिन ठीक है हम पढ़ रहे हैं, but we saw the setting, हम जो बिल्कुल initially mentioned, and what did we see there? How is this Verfremdungseffect on that level? So might be kindlish gemalt. हाँ, ठीक है, as opposed to your expressionist dramas, you have Elaborately. हाँ, Yeah. ठीक है, रिश्तेश, that you have a cardboard cutout of one which is still okay, and but पीछे जो city है, it's like kindlich gemalt, und es gibt auch Plakaten mit Sprüchen im Zuschauerraum, which are like guck nicht so romantisch, या glotz क्या था वो जो भी है, ठीक है, nicht so romantisch an, and other things from the show, ठीक है, which adds to the emphasizes the fictionality of the play, and it is happening in other places as well, because अब जब हमने पढ़ लिया तीनों acts, so we will notice how each and every act is ending also, especially the second and the third one. Okay, this constant reminding of fictionality is itself a Verfremdungseffect, yeah. I think that is all, ना? अगर कुछ भूल गए हो तो obviously we also talked about the politischer historischer Hintergrund, Spartacus Aufstand क्या है, क्या था, क्रीग के टाइम पर ये इसमें क्या चल रहा था, how is that to be, how is this situated in that, उसका हम थोड़ा सा आज कर लेंगे, but that the themes which are you can see on the screen, class struggles हैं, Krieg, Revolution, Aufstand, Krieg, Samkehrende, Wahre Liebe und so weiter, मतलब actually तो it's a love story, ठीक है, हम थीम की बात करें तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड दैट इज दैट इट्स लव स्टोरी आफ्टर, ठीक है, तो वार लीबर तो है ही सेंट्रल थीम, बट obviously there are other things interwoven, because of which that talking about war or labor between two people of different classes becomes a strategy again, which with जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. Habe ich was vergessen? Oder können wir jetzt weitergehen? ठीक है, चलो फिर. Okay, die Hausaufgabe war, dass ihr die nächsten 2 Akten lesen solltet. Habt ihr das gemacht? Yeah. Okay. ठीक है. I have read till half of third, not completely third. ठीक है, but at least the second one you have read, because the third one is still a short act. The second yes, one second is and third half. हाँ, ठीक है. The under and out, ना? Okay, then perhaps apart from Sumit and Shivani, can anyone else tell us worum geht es in dem zweiten Akt? Anybody? लेकिन उससे पहले सॉरी, आज कौन प्रोटोकॉल लिख रहा है? I know, I think almost everybody has written one protocol, but that means we can start again. Oder gibt es unter uns jemand, der das noch nicht gemacht hat? Also wer von euch möchte heute das Protokoll schreiben? ठीक है, इन दैट केस फिर मैं रैंडमली अलॉट कर रही हूँ आंखें बंद करके. Rishubi and Gautam, is that okay? Ma'am, my internet is not very good, so ठीक है, but Gautam, are you okay with it? next class maybe. ठीक है, हाँ. And anybody else, or else मैं ही देख रही हूँ. Otherwise me and Shubhangi can write for today. But मतलब एक चीज जो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि यू कैन ऑल्सो इंटरचेंज ना, कि जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टनर के साथ बार बार लिखना है.
Of course, I can't force you, लेकिन this is just a suggestion. Or do you want to write together? Me and Shubhangi can write. चलो ठीक है, आज फिर तुम और शुभांगी लिख लो, ठीक है? And Gautam, Okay. you can perhaps write next time, and somebody else will also then volunteer, huh? Okay, चलो danke. Also Commonwealth zurück zu unserer Frage, worum geht es inhaltlich in dem zweiten Akt? Was passiert? The first act obviously ends with Kragler entering the scene after 4 years, and जो not Mutter Kragler, Entschuldigung, जो Frau Balliker है, she is in shock that he has returned, and the others have gone to Piccadilly bar to celebrate their Verlobung of Mork and Anna. So everybody is on their way to that bar. Jetzt Akt 2. Was passiert? कौन बोलना चाहता है? Okay, can I? एक सेकंड में see. No, I said कि मतलब perhaps later, लेकिन अभी somebody, मतलब not you and not Shivani. Okay. Can anybody else start with this? How about you, Trishala? Vistuda, hello. Yeah, ma'am. So can you tell us something about Act 2? I haven't read it. But क्यों? Actually, I'm not well. Okay. ठीक है, but I've also चलो ठीक है, okay. But please do read. अब जो भी बचेगा, जैसे आज डिस्कस करने के बाद we have time till Tuesday, तब तक प्लीज सब जनों को सब पूरा का पूरा ये पढ़ना है. It's not a long shtuk, ना? It's a very short one. So please complete it by Tuesday. Okay, Himanshu, I think has at the moment उसका on and off चल रहा है इंटरनेट का. Anybody else, please do volunteer. नहीं तो जो स्कूल की तरह एक एक स्टूडेंट को बुलाना पड़ेगा. मोहम्मद सैफ. Can I write the protocol on Tuesday with Gautam? ठीक है, okay. Danke. But let me see, have you written together before? लेकिन हाँ ठीक है. No, Looks we like have. that. हाँ ठीक है. Just writing. 10. हाँ बताओ मोहम्मद सैफ. यस मैम. हाँ फिर क्या होता है एक्ट में? एक्चुअली मैम आई हैव नॉट रीड सेकंड एक्ट. अच्छा, किसने पढ़ा है फिर? टाइम नहीं मिला थोड़ा. अच्छा, लेकिन मैंने क्लास भी तो लेट स्टार्ट किया, तो कुछ तो पढ़ा होगा तब बीच में जब मैंने बोला था कि पढ़ लो. वो तो टाइम था. मैम नमिता मैम का वो था, वो पढ़ने में टाइम चला गया. लेकिन क्लास तो मेरी थी ना इमीडिएटली. देखो ऐसा टाइम तब नहीं मिलता जब कुछ और क्लास से होती है कुछ है, लेकिन जब मैंने अपनी ही क्लास में से टाइम दिया था तो तब तो ये नहीं हो सकता ना आउटरेडर. यस मैम, आई विल रीड नेक्स्ट क्लास फॉर नेक्स्ट. ठीक है, मैं देखती हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे को. फिर बाकी सबसे मैं ऐसे ही पूछने वाली सबसे, इसका मतलब ये नहीं कि गायब हो जाना है क्लास में से. नहीं, नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली विल. हाँ ओके. ओके, एनीबडी एल्स? अब मैं ठीक है, सुमित और शिवानी तुम में से भी कोई भी बोल सकता है. लेकिन अच्छा, जेन्युइनली मैं पूछना चाह रही हूँ कि आई एम अज्यूमिंग कि सुमित और शिवानी तुमने पढ़ा है ना? चाहे मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्ट 2, इवन नॉट एक्ट 3. किसने पढ़ा है एक्ट? मैंने दोनों पार्ट पढ़े इंग्लिश के, लेकिन मुझे ये समझ में ये नहीं आया कि हाँ मतलब
समय बोलना क्या है, जस्ट लाइक मैंने ऐसे ही रीड कर दिया कि हाँ दैट्स ओके, ठीक है, वो हम डिस्कस तभी तो देखो ऐसा है कि पहले स्टार्ट तो करो पढ़ना, अगर दैट मीन्स कि यू कैन से समथिंग, है ना, just like चाहे मैंने ऐसे गलत ही समझे होंगे या सही भी समझे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैंने हिंदी का वो पढ़ा, हिंदी का ये ड्रामा पढ़ा, तो जस्ट लाइक मैं उसे ही पढ़ता चला गया। ना तो मैंने, मुझे ये पता चला कि इसमें जस्ट लाइक मुझे यहाँ ये हो रहा है, वो मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन अब इसके मतलब क्या है उसके बियॉन्ड में नहीं सोच पाता अभी तक, वो नहीं स्पष्ट देखो नहीं है। ऐसा है कि वो चीज तो हम आज डिस्कस करेंगे ना, मेरा तो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि वो क्या रहा है उसमें, तो वो तो समझ में आ रहा है तुम्हें जो तुम कह रहे हो, है ना, कि चल क्या रहा है, अब क्यों चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा, वो हम कर सकते हैं साथ में डिस्कस, है ना। तो मतलब रंजन तुमने पढ़ा है ना। वाला पढ़ा है मैंने। ठीक है, ओके। हु हैज रेड इट, हु एल्स हैज रेड इट, 3 लोगों ने बोला है। त्रिशाला ने नहीं पढ़ा है। अच्छा ठीक है, गौतम ने पढ़ा है। मैंने भी पढ़ा है मैम। ठीक है, फिर बोल कोई क्यों नहीं रहा है, तो परहैप्स रंजन डू यू वांट टू स्टार्ट, कि क्या समझ में आया, क्या हुआ है एक्ट में, एंड देन अदर पीपल, एक बार स्टार्ट करने के बाद है फिर अदर पीपल विल एर्गेंसन कर लेंगे या करेक्ट कर लेंगे अगर गलत बोल रहे होगे तो, है ना। हाँ रंजन, सिंपल सी बात है, वेयर आर दे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं द सेकेंड एक्ट। हाँ हेलो। Yes, ma'am. Ma'am, they are at the Piccadilly bar. हाँ ठीक है, Piccadilly bar, obviously the act is called Pfeffer. Und was passiert? चलो एनीबडी, मतलब इट्स ओपन टू, शिबानी अगर तुम कहना चाहते हो या सुमित तुम कहना चाहते हो, एनीबडी कैन पिच इन। So, ma'am, it basically starts like a date at a Piccadilly bar, and some romantic things were like going on, like kissing and all. And suddenly, like Frau Bellikun, Mr. Bellik arrived, and they say about that red moon, and perhaps they know the arrival of that Andrea. And while reading this act, I feel like I'm getting close towards the perspective of the figure, like character Eigenschaft, the way they communicate. By saying, जब ये बोलते हैं ना उसके पापा, एक मिनट कि das ist Realpolitik, daran fehlt es uns in Deutschland. Es ist ganz einfach. Haben Sie mit eine Frau zu unterhalten? Was hast du? Have you got anything, like, do you have any means to support your wife? हाँ, but you And are just going, अभी थोड़ा सा let us come back, you are right. okay, ठीक है, कि तुम जो कैरेक्टर आइगनशाफ्ट की बात करो, और जस्ट क्लोज जा रहे हैं, मतलब फील कर रहे हाँ हैं. ठीक है, तो विल डिस्कस अबाउट इट। अभी इन हार्टली जरा कोहेरेंटली आगे बढ़ते हैं। इनिशियली तो अभी तो तुमने ये भी नहीं मेंशन किया ना कि क्रागलर एंटर्स है ना अभी, लेकिन यू आर राइट कि इनिशियली इट स्टार्ट्स एज क्या कहते हैं, Some दिस romantic पीपल आर stuff, हियर, kissing, yeah. अब वेदर इट्स रोमांटिक स्टफ और नॉट, ओके ठीक है, सीम्स रोमांटिक या जो भी है, बट या ओके ठीक है, कि आना और तुम्हारे कौन है, मूर्ख, ठीक है, दे आर डूइंग स्टफ व्हिच इट सीम्स ऑलमोस्ट नॉर्मल रोमांटिक stuff ना, कि you don't have the guts to kiss me in public and you are so ordinaire und so weiter, and he you know those things, and Yeah, what else, and other people are also entering धीरे धीरे, like that journalist Babu. okay. And what are they talking about? एक तो ठीक है, फ्राउ बालिका has entered, she obviously understand कि मतलब she has in the first She act, knows that like Andreas has come. हाँ ठीक है, तो अब वो she is out of her elements here, and obviously मतलब she blames the Rotamont, okay, etc etc, and what else happens here? They were also talking about inviting people or not for their wedding day.
नहीं, आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ फिर लोबुंग पे और भी लोगों को हम बुला देते हैं. हाँ, दे वर आल्सो टॉकिंग अबाउट कि कब शादी होगी हाँ, एंड दैट वी शुड हैव कॉल्ड मोर पीपल टू द more people. Lobung, and we know even if other people I don't mean, know. there were also like protest at newspaper office by. हाँ, ठीक है, तो नेबन बाय दैट इज हैपनिंग. तो एक Yeah. तरह से तो ये है. दूसरी तरफ से बिफोर गोइंग देयर, डज एनीवन एल्स आल्सो नो दैट Kragler is here? Babush. Babush. हाँ, ठीक है. So Babush is telling Mork that you know Yes. that the क्या कहते हैं, Wolf mit dem Mond aus Afrika ist hier, ना? ist mit dem Mond gekommen. Okay. ठीक है. Und so weiter. Okay. And what is with Herr Balika here? She like kind of afraid कि what will happen now. नहीं, he is तो I think drunk. Frau Not Balika. Frau Balika. I was saying Herr Balika, but ठीक है. Okay. Frau Balika is, yeah, she is afraid and she is like not directly saying anything, but she is she was saying कि हमें ज़्यादा लोगों को बुलाना चाहिए था फिर लोबुंग पे. Obviously she is afraid कि he'll show up here as well. But your Herr Balika is like not yet here and he's drunk. Okay. He also mentioned na Zeitis guilt. हाँ, that he keeps on mentioning. Sight is Yeah. killed. जल्दी जो भी करना है वो शादी वगैरह. Okay, तो ये है, they have entered here and obviously the news has also come कि मतलब to some people जैसे the mother and Babush and Mork now know that Andreas is here, but not yet your Anna and perhaps not Herr Balika. We don't know, but Herr Balika is in any case betrunken und Anna hat keine Ahnung. Okay. Also, was passiert jetzt? और हाँ, अब तुम वो बात बोल सकते हो, was passiert im Hintergrund? तब मतलब इधर उधर की बातें भी हो रही है, we can just ignore that. हाँ, बोलो. मतलब I'm just marking it here. बाद में बात कर लेंगे इस बारे में. लेकिन what is happening now? Kragler shows up. हाँ, ठीक है. You have Sorry. नहीं, but it's not like a very good meow. It's like क्या तो लड़ाई हो रही है किसी के साथ या हाँ, कुछ नहीं, हो वो रहा है. she wants to come and sit on my lap और अच्छा. and मैं काम कर रही हूँ इसलिए वो irritated है. अच्छा, ओके, ठीक है. तो अब कमिंग बैक टू दिस कि एक तो ये पीछे भी कुछ हो रहा है ना. इट्स नॉट ओनली बिफोर क्रागलर एंटर्स, देयर इज समथिंग एल्स आल्सो जो बाबूश बताने की कोशिश कर रहा है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि बाहर कुछ अनरेस्ट छिड़ रहा है. और एम आई मिस्टेकन या क्रागलर पहले एंटर करता है? आई थिंक देन आई एम मिस्टेकन. Kragler enter first. हाँ, ओके, ठीक है. That happens later. By the end of this act. हाँ, ठीक है, okay. So this thing is going on and your Kragler now enters the scene, जो कि, and who's the first one to see him? Anna. हाँ, also Anna sieht ihm and was passiert? उसके बाद फिर क्या होता है? Wind also comes. And was saying was dust fury and wind. हाँ, ठीक है. तो Candle ये is also dimming now. हाँ, ठीक है. So you have these क्या कहते हैं, ओम गेबों वाली setting. Your mond is there, your wind is there. Dramatisch. हाँ, ठीक है. तो वो सब हो रहा है. But in what way we can discuss later. But okay, that all is happening. And then Kragler enters. And Anna sees him and obviously is shocked. Okay. Was passiert? Anna? How are others reacting now? I think like they all are shocked and thinking that he's not real, like he's a ghost also. Okay, एक मतलब mostly Anna is
obviously फ्राउ बालिका को तो पता ही है कि he is Anna not. is very shocked. Yeah. हाँ, तो Anna for perhaps she takes him to be a ghost initially, but what about the others? Perhaps also Balika, because he's also saying this, but what about the others who already knew? I mean, Murk knew, Frau Balika knew that he's here. So how are they reacting? How is Murk reacting? मतलब it's सामने. I hope I'm sharing the correct file. हाँ. So how is Murk reacting to this? How is Babush reacting to More this? Huh? being like getting angry, like he's telling the Kellner to throw him out. हाँ, ठीक है. Saying Kellner, das ist ihr Hausfriedensbruch, hinausschmeißen. Läuft an der Wand hin, reißt dabei die Gardine zurück, Mund. ठीक है. कि ये जो भी चीजें हैं इसको खत्म करो, बंद करो, इनको बाहर फेंक दो. ठीक है. ओके. मतलब ओवरऑल देखा जाए, चाहे हम इसको अब क्रोनोलॉजिकली ना भी चले लीनियरली, वी नो मुर्क is extremely findlish gegen ihn. Na? He wants him thrown out. And Balika, how is Balika, Herr Balika, reacting to that? Sumit, can you please switch off your mic when you are not speaking? Okay. How is Babush reacting to it? How is Murk? Murk का हमने कर लिया, Balika क्या कैसे कर रहा है? Is it similar to the reaction of Murk or is it different? Ma'am, Babuk is like really wanting to like calm the situation down. हाँ, okay. Babush is not initially. He's also very sympathetic towards him. He's saying na Achtung, er hat noch rohes Fleisch unter hem. Das beißt ihn. ठीक है, und so weiter. ठीक है, तो Babush is not reacting in the same way as Murk and Balika. Murk and Balika का similar reaction है कि मतलब They were angry and frustrated. Angry and basically very findlish ihm gegenüber, and they want him thrown out immediately. Whereas Babush is initially sympathetic towards him. ठीक है. And what else? How does he show his sympathy? एक तो यही दिख रहा है कि ऐसा मत करो, मतलब इसको मारना मत, stock out den Tisch, हाँ, mach nur ja keinen Skandal, हाँ, etc. etc. Initially obviously geht ruhig raus, geordnet raus, ठीक है, वो तो initially तो he is also saying कि हाँ जाओ, लेकिन मतलब not in the same findlish way as perhaps Murk and Balika. And what happens after that? Is he thrown out? No. Okay. So what happens? I'm like then Babush Marco बोलता है Zen sie doch sein Gesicht an. He might thought कि Murk is feeling jealous. He might have thought कि now Anna will leave her and go with her. So what does he do then? Und then Babuk sagt, sehen Sie doch sein Gesicht an. Sie hat schon gesehen. Das war einmal wie Milch und Apfel. Jetzt ist ihn ein verfehlter Dattel. Haben Sie doch keine Angst. Sie gehen hinaus. Basically, he's persuading him कि look at his face. We say like basically destroyed. He used to be like very young and now good-looking man, but now he's like destroyed. And so don't worry, she's not going to leave you. Okay. मतलब he's talking about Andreas Gesicht, no? Yeah, Andreas Gesicht. हाँ, ठीक है. मतलब वो completely broken हो चुका है. He looks very hellish. He is मतलब a broken Dirty, person. ठीक है, dirty and has nothing on him. ठीक है, so मतलब he's not a danger. Okay. What happens after that? बालिका तो वैसे ही Anna and मतलब Krab talk like to each other.
Huh? Anna and Kragler talk to each other, like, as in Mhm. Kragler says that es ist alles wie weggewischt in meinem Kopf. Ich Mhm. verstehe nicht mehr gut. So then Mhm. she asks him, bist du nicht in die Luft geflogen? Like she wonders where he was. Mhm. Then she says, haben sie dich nicht durchs Gesicht geschossen? Mhm. She thinks that he's been shot in the face. Because she heard it from other people, and she was in the impression that he has died. Yeah. So she finds it hard to believe that he's back. Yeah. And Haben ठीक dich है, nicht Fische gefressen. हाँ उन so weiter. ठीक है, तो ये तो आना का रिएक्शन हो गया. Yeah. And what happens after that? And she also says, like, warum bist du so lange fort gewesen? Und jetzt, also kann ich nicht mehr zu dir hin. Like, she says, I can't come to you. हाँ ठीक है, which she clarifies later on, मतलब obviously not in this act, but it हमको तो next third act में पता चलता है. ठीक है, but okay, but what happened? And then what is he saying? What is she saying here? And what is he saying here? ठीक है, war ich überhaupt fort? Then she says all that melodramatic stuff, like, not initially. Initially, I remembered you. I felt your touch when I was going down that alley, or jo bhi hai, whatever. Okay, and I saw your face when but one day I stopped seeing your face and, vergessen. Okay, I couldn't remember how you looked, etc., etc. To which he responds, "Ki, perhaps a photograph would have helped. Okay, in remembering how I looked." Also wider. Okay. And all this while, मतलब okay, you will tell me later on कि इस टाइम पे फिर वो कहाँ पर है, अपना मूर्ख क्या कर रहा है. ठीक है, वो बाद में पता चलता है what is happening here. So he is basically, यहाँ पे you have a dialogue between Anna and Kragler, pretty melodramatic also, कि what has he gone through, and she's like ich kann nicht mehr zu dir und so weiter, ये सब चीजें जो चल रही हैं. ठीक है, ich sehe so aus, ich habe so viel gelitten, this and that. Okay. What else? What happens after that? Obviously, he's trying to convince her to come with him, and she's like hesitating. So this whole emotional scene is going on, and then what happens with the Kellner and Undi Lilia? When he has taken, when Andreas Joby has taken Anna in his arms and has almost convinced her to come to him. Was that then enters the Kellner, na? Yes, suddenly he reißt sie herum, und sieht den Kellner, den fix und vorgebeugt anstarrt. Kellner aus der Fassung lässt sein Tablett fallen, stammelt und sagt, die Hauptsache ist, ob sie ihre Lilie noch hat. So what does this mean? Und bedeutet das hier virginity? Well, I also thought that, perhaps not, because later on in by the end of this act, you would see them talking about it. Lilia Haben is like you waiting with love for the person you were waiting for initially. That picture thing you have, the lily in your hand, you're waiting for. But perhaps it has that kind of a connotation also. Because I know that क्या बोलते हैं, giving your flower and this and that is a metaphor Yeah, for losing virginity. ठीक है, that's so what I perhaps it has that connotation, but it is conflated with the other connotation as well. Lilian or Haben, okay, it can be still be a virgin, but also that also means this, that she is waiting for him, but she is not waiting. She has almost moved on. So it has it has that romantic connotation here. That is why he's calling it him Roman laser. That you are waiting for your long lost love to come back. You're with your love and perhaps virginity intact.
Okay. See, there is this hidden connotation, no doubt, and that's why they are deliberating on this. लीलिया, ठीक है? कि it ऊपर से it means love, but अंदर से हमें भी पता है कि दूसरी चीज की भी बात हो रही है, because that is exactly what she does not have now. She is with child. Okay. So also was passiert. Kellner तो भाग जाता है. ये बोलती है कि ये मेन चीज है, पूछो कि she's still in love with you, she's still waiting for you or not, or has she moved on? अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, that's why go back to English version in between because confusing है यहाँ पे. But you have some people still on the scene, some people outside of the room, जैसे बाबूश बाहर से बोल रहा है, and then you later on also you have that. But what is happening now? ऊपर आवे मारिया चल रहा था पहले. आवे मारिया is usually, if I'm मतलब pronouncing it correctly, it's a song which reminds you of funerals. ठीक है? Now I don't know the connotation of Peruaner in Wali, but it's a Tanz Gesang. ठीक है? What is happening now? What happens now? They're telling him to Balika is telling him to sit down. हाँ, नहीं, not Balika, ठीक है? But Babush is now telling everybody कि बैठ जाओ, अगर बैठे होते तो मतलब this is also the thing that we can talk about later. हाँ, कि सबको बैठा रहा है. In Sitzen gibt es kein Pathos. हाँ, बोलो. Above, like actually that paragraph इससे ऊपर, that was not very clear who's saying. Like यहाँ से Balika etwas ernüchtert Leute rein setzen sich sieht die Gardiner zu ist. हाँ. तो ये कौन, like who is saying this, समझ नहीं आ रहा. हाँ, ये तो बालिका ही बोल रहा है Setzen Sie sich, ठीक है? But मतलब perhaps to मतलब not to कौन है अपना क्रागलर, ठीक है? But दूसरे लोगों को कि यहाँ पे Sie haben einen roten Mond bei sich und Gewehre hinter sich, जो भी है बाबूश Zeitungsviertel, ठीक है? बाब is बाबूश का short form. Man muss mit ihnen rechnen, zündet wieder alle Kerzen an, setzen Sie sich. ठीक है कि अब सब बैठ जाओ, क्यों खड़े हुए हो, वगैरह वगैरह. हाँ, लेकिन बाबूश is the one basically who's now telling everybody to sit down, ठीक है? कि अब बैठ जाओ, बैठे होगे तो ड्रामा नहीं होगा, खड़े रहोगे तो ड्रामा होगा. हाँ, तो in Sitzen gibt es kein Pathos. अगर बोलता है ना लेटर ऑन भी कि अगर लोग ज्यादा अपना टाइम उसमें बिताते हैं, जिट्सन में बिताते, तो शायद दुनिया अलग न होती आज. ठीक है? तो ही इज लाइक फॉर दिस सिट डाउन एंड डोंट क्रिएट ड्रामा. ओके, सो ही इज मेकिंग एवरीबॉडी सिट डाउन. फिर Frau Balika möchte sich möchte weiter hin trinken Kirschwasser, because she cannot bear the situation. तो अपने आप को वो Herr Balika तो drunk है ही, and Frau Balika also wants to placate herself. What else? Where is your Murk? Obviously Babush is telling him to sit down. Andreas को भी, all that हम जो सब नहीं पढ़ रहे हैं. And what is happening now? Murk has gone somewhere. He has gone somewhere. He's gone to get Maria, like she's a prostitute, I think. And he is actually dancing on the मतलब he's on the dance floor with Maria. I didn't understand that कि वो कहाँ था actually. ठीक है, तो he was out there, मतलब on dancing, मतलब dance floor नहीं बोलोगे, लेकिन not sitting here,
So maybe there is another room where dancing and all happens. Okay, he went there and he was dancing with a prostitute named Mari. Yeah, Maria. I think Mari he hai. Okay. So what happens then when Babush is has convinced everybody to sit down? And how are other people responding to it, and what is happening? Oh, they're talking. They're asking him, "What do you want?" And Mrs. Balika is saying like the Kaiser has said, King has said, Lerna leiden ohne zu, like so don't complain, just suffer. Okay, so this is an important thing which Frau Balika keeps on repeating. Unser Kaiser hat gesagt, lernen leiden ohne zu klagen, und das sagt sie in anderen Worten auch nochmals. That means, and why is he saying that? Was hat Kaiser damit zu tun? Mit Kragler? Weil dieser Krieg in Namens Kaiser to fight bolo? By choice, like she's saying. So if like 4 years you were away, that was your choice, like that. No, not his choice, but he was fighting for Kaiser, no? So so he was fighting for this nation, and obviously the nation is under Kaiser. तो अब सफर कर रहे हो तो उसको सहना सीखो, मतलब डोंट मेक अ सीन आउट ऑफ इट टाइप्स. ठीक है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये बोल रही है, थोड़ा तमीज से बोल रही है, बट मेन जिस्ट तो ये है ना कि डोंट शो डिसकंटेंट विद योर लॉट, विद योर फेट. ठीक है, तो ये बोल रही है. एंड बट अबाउट अदर पीपल, ऑब्वियसली आना इज लाइक उसका स्वीश पार्ट अपना, मतलब she does not know. Obviously she still loves him, but because of the other reason, that the other thing, she is unable to decide. But obviously she has sympathies towards him. Babush has sympathies towards him. He wants him to tell his story. कि tell your story. क्या मतलब he जो बोलता है ना उसको कि he is the one who is the victim here. He has the right to speak. Why not? I don't know where he says it. Forgotten. But so he tells him to speak. Whereas Balika, how is Balika reacting to all that? Balika is clearly feindlich. He's like, reden Sie, was Sie wollen, und dann schmeiße ich Sie hinaus. कि ठीक है, मान गया कि बोलना है बोलो, लेकिन he is not really sympathetic towards him, listening to him, and he just wants to throw him out. He has no feeling towards him whatsoever. And same is obviously with Murk also. Only Babush is showing sympathy. Okay, now Murk is back with the prostitute Mari. So what is happening here? क्या बीच-बीच में बोल के जा रहा है मुर्ख. नहीं, मुर्ख बीच-बीच में कहीं कुछ नहीं बोल के जा रहा. वो पीछे गायब हो गया था जब लास्ट तो उसने बोला था कि मैं eifersüchtig नहीं हूँ. मुझे I am not that kind of person who feels eifersucht, and he just vanishes. And till that time ये ड्रामा हो रहा है whereby Murk is not here. बीच में सिर्फ तुम्हारा बाबूश बालिका और फ्राउ बालिका आना और यही है, क्रागलर है without Murk. Now Murk is back with वो Mari, the prostitute, and what is happening now? You tell. बताओ. Kragler and Murk are exchanging words, है ना? Yeah, they're like fighting sort of. Yeah. So he obviously started by Murk, who is being pretty nasty towards him. Ist die Hundekomödie noch nicht ausgefeilscht? Then he's saying, hat verkrüppelte Ohren, sagt, hat Ei im Kopf, soll hinausgehen und so weiter. So they're exchanging words. ठीक है? Okay. Then Kragler is explaining his situation, what happened, fear yara. ठीक है? So he's explaining his situation, what is happening, and how are other people reacting to that?
जैसे Frau Balika तो obviously der Kaiser hat gesagt, stark sein im Schmerz. ठीक है, und so weiter. Balika, es ist ihnen so schlecht gegangen. Sie haben für Kaiser und Reich gekämpft. Tut mir leid um sie. Wollen sie was? Although he's saying these things, but we know after reading a bit that he feels this, ना कि it's not his fault. हाँ, तुमने ये किया, हमने ये किया, इसमें मेरा क्या है? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? करा, तुम्हारे साथ हुआ है तो मैं थोड़ी ना किया है, तो why should I pay for it? So बालिका का तो ये है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं. फ्राउ बालिका का ये है कि जो हुआ है तुम्हारे साथ उसको तुम सहना सीखो, बिकॉज दैट इज व्हाट आवर काइजर सेज. मूर्खा का क्या वो है? बाबूश तो ऑब्वियसली ही सीज दैट ही इज अ विक्टिम ऑफ द सिचुएशन एंड ही वांट्स हिम टू स्पीक. एट द मोमेंट तुम यही देख रहे हैं बाबूश में. हाँ, आना ऑब्वियसली इज इन स्टिल इन लव ऑब्वियसली, तो वो तो अलग सिचुएशन है. बट हाउ इज मूर्ख eingestellt gegenüber ihn? Murk is saying that Murk is saying that or he doesn't feel that he should feel sorry for him or anything. He's saying that I have been paying for your heroic actions and all that you go and do. It's not only मतलब Balika तो doesn't see any reason to feel sympathy, but he's not simply not feeling sympathy. In fact, he hates him for what he is. Murk legt seine Füße auf den Tisch, kalt, bös, betrunken, völlig hinabgeschwommen, aufgefischt, mit Schlamm im Maul. Sehen Sie sich meine Stiefel an. Ich hatte einmal solche wie Sie. कि मैंने भी तो काम किया है, मैं भी तुम्हारी सिचुएशन में था. Kaufen Sie sich solche wie ich. तो अब तुम भी वही करके मेरे जैसे बनो. Kommen Sie wieder, wissen Sie was Sie sind. ठीक है, जिसमें मरी, obviously there are other people present, not only the family. Mari and Kellner are also reacting to in a certain way. How are they reacting to this whole situation? They just seem curious, na? So Varanasi by military, they want to know where he was, what was he doing. But they are asking, is it what they are asking Andreas, or are they asking Murk? And is there Andreas? No, they are asking Murk, and this is Murk, not curiosity. This is sarcastic rhetoric of Raga. कि तुम जो अपने आप रोना शुरू कर दिया मूर्ख ने कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था. हाँ, तो क्या तुम मिलिटेयर में थे क्या? वर यू इन द क्रीग? तभी तो बाद में जाके मूर्ख इरिटेट होके मारी से बोलते ना कि तुम क्यों नहीं थी, यू शुड हैव बीन इन द मिलिटेयर. ठीक है, Okay, now दफा हो जाओ, ये मतलब बोल रहा है मारी को. ठीक है. So basically he's telling this guy Andreas that even I was in a bad situation, I worked hard to get to where I am. हाँ, ठीक है. तो दैट इज व्हाट जो बिटरनेस है मूर्ख की, वो यहाँ से है कि ही इज नॉट मतलब जोल्डाटन वाला पार्ट में, बट द अदर पर्सन हु रोज मतलब who worked according to him, he worked and he's also suffered equally. ठीक है. तो वो कह रहा है ना कि waren Sie beim Militär? Nee, ich gehöre zu den Leuten, die eure Heldentaten bezahlen sollen. अब ये उसको बोल रहा है आंद्रेयास को कि तुमने जो हीरोइक एक्ट्स किए हैं उनका भरपाई हमने की है. हाँ, die Walze ist kaputt gegangen. फिर बाबूश कह रहा है reden Sie doch keine Au pair. ठीक है, तो बाबूश is not obviously siding with Murk. Das ist ja ekelhaft. Schließlich haben Sie doch verdient, nicht? I mean, वो थोड़ी सच्चाई निकाल के ला रहा है, या कि you actually profited from this Krieg instead of losing, जैसे कि Kragner और दूसरे Soldaten ने किया. Lassen Sie doch Ihre Stiefel aus dem Spiel. अब यहाँ पर तुम जो सुमित इनिशियली कहते हैं ना रियल पॉलिटिक वाली चीज, कि now Balika in this context saying this thing, कि sehen Sie, das ist es, worauf ankommt. Hier liegt der Hase im Pfeffer. Das ist keine Au pair, das ist Realpolitik. Daran fehlt es uns in Deutschland. Es ist ganz einfach. Haben Sie Mittel, eine Frau zu unterhalten, oder haben Sie Schwimmhäute zwischen den Fingern? तो उसका तो सीधा सीधा बालिका इज बीइंग वेरी क्या बोलते हैं, कोट एंड कोट रियलिस्टिक इन दैट सेंस कि डजंट मैटर कि पहले का था कौन कितना सफर किया है. दैट इज नॉट द इशू. द इशू इज कि आर यू इन अ पोजीशन टू सपोर्ट अ वाइफ, एंड यू आर नॉट. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग.
realpolitik you understand ना कि it's not मतलब although मतलब यहाँ पर तो it's used as a metaphor, लेकिन outside of it एक तो होता है कि क्या बोलते हैं, you have some ideology and you follow, you know, you see a world in a certain way and you try to bring the world in that position, चाहे तुम left हो या right हो कुछ भी हो, but you have an ideology and you see things in that larger picture, whereas real politics is all about solving problems जो अभी हैं at the moment, not thinking about past, not thinking about future, but what are the problems right now, and let's just be very functional तरीके से just solving the current problems, not in the sense of larger picture. Okay, so he is showing that kind of worldview, whereas Murk, मतलब you can actually make a distinction between Murk and Balika. Balika is more about present की opportunity, not thinking about past, not thinking and obviously denying any responsibility for the past also ना कि I am not responsible for anybody's pain or कुछ अच्छा भी है किसी के साथ, what can we do now is his thinking, whereas Murk sees the past also differently ना कि I have worked, I have also suffered, where is my मतलब I am not seen as a held, ये सब वो तो उसका एक अलग situation है. So फिर क्या हो रहा है, ऑब्वियसली क्या कहते हैं टेलिंग वाइटर बता रहा है तो अपनी स्टोरी बता रहा है आगे कि हमने क्या क्या सहा, क्या क्या देखा, ये सब वो था, जिस पे फ्राउ बालिका इज लाइक trying to not feel sympathy for him and saying it is a kindlicher raider की तरह देख रही है. Also was passiert weiter? उसको कहानी बता रहा है बाबूश के वो करने करके जो बाबूश उसे इनकरेज कर रहा है. अब मूर्ख क्या कर रहा है, dann biete ich 60 Mark, verkaufen Sie. मतलब वो शुरू पहले से ही शुरू कर दिया था उसने. What is he offering him? What is Murk doing? What is with the Stiefel? उसने स्टीफल की बात की है ना. एक सेकंड, कहाँ इनिशियली कहाँ बोला था? Offering him money, no, for his. हाँ इनिशियली स्टार्टेड विद 40 यूरोस के मैं म्यूजियम क्रीग्स म्यूजियम के लिए अपने जूते बेच दो मुझको. So we can also talk about that. What role does that? What is the metaphor behind it? But there he's asking for these shoes, and in exchange is offering money. और 60 फिर 100 मार्क तक भी पहुंच जाता है, जिस पे फिर obviously Kragler finally retorts back, and I think also Kellner वगैरह मारी वगैरह. Was bedeutet hier Seeräuber? Seeräuber are pirates. Pirates. Ich bin doch kein Seeräuber, was geht mich der rote Mond an? Ich kann nur die Augen nicht aufbringen. Ich bin ein Stück Fleisch und habe ein frisches Hemd an. Ich bin doch kein Gespenst. ठीक है, तो ये तो अपने बारे में बात कर रहा है. What happens after that? How are Kellner and especially prostitute reacting to this, Marie? I think Marie is telling him that he should be ashamed. हाँ ठीक है, so we see that even Kellner and Marie both, ठीक है, these people are siding clearly with Andreas Kragler, and they are against Murk. And Marie even says कि हाँ ये ऐसा ही है, मतलब when he was dancing with me, मतलब उसकी बेइज्जती कर रही थी बेसिकली, कहता ना है. हाँ जैसे यहाँ पर भी बात दोबारा से बोली, वारंसी beim Militär, जब वो अपनी रोने रो रहा है मर्क. हाँ तो warum warst du nicht da, ठीक है, तो तुम थे क्या.
तो ये सब चल रहा है, बट हाँ मतलब मेन थिंग इज कि यू हैव दिस Feindlichkeit going on between you have Balika reacting a certain way, Murk reacting in a similar way, Frau Balika, मतलब तीनों चार different ways में react कर रहे हैं, but उनका Einstellung मतलब एक ही जैसा है, that is Gegen Kragler in different ways, being it a bit with sympathy जैसे Frau Balika कह रही है, या without any feeling, apathy and materialistic वो Klarheit जैसे हर बालिका कर रहा है, या हास, ठीक है, जो कि मूर्ख कर रहा है, but they are both all three against them. Anna is obviously confused for other reasons. Babush is showing sympathy and is encouraging him to speak, but what does that mean? We'll talk about it. Kellner and Marie on the other hand are emotionally siding with Kragler, ठीक है, okay, etc. तो फिर वही exchange of words, etc. What happens in the end? या अगर हम end पे पहुंच गए तो हाँ ऑलमोस्ट, फिर क्या होता है जब ये लड़ाइयाँ चल रही हैं? Babush, I think, asks her that leaps do in. Is it Babush? Or is it no? Kragler, sorry. Kragler asks Anna if she loves Murk. हाँ. Mit dem grünen Gesicht wie eine Unreife-Nuss. Like, do you want to be with him instead? Like, just, yeah, like he has blood in his shoes and all. Matlab base. Dane leads to higher Tish. Yeah. And then what happens after that? ये तो आई थिंक ऊपर ही कहीं बात हुई होगी. Anyway, now there is Unruhe outside suddenly. Die Musik bricht je ab. Man hört erregte Rufe, sie kommen. Ruhe. Der Kellner bläst das Kerzenlicht aus, dann langsam anwachsend Stampfschritt draußen. Johlen, Pfeifen, Singen, Trommeln. Das Stampfen und Johlen dauert an. Was passiert hier? Trommel in der Nacht, the uprising, the demonstration is happening. हाँ, ठीक है, your uprising has begun. ठीक है, the Unruhen sind ausgebrochen. हाँ, वो Zeitungsviertel पे जो हमला बोल दिया है वहाँ पे, ठीक है. So now Balika is clearly calling them companions of Andreas Kragler because they are from that class, working class उसमें से. Although Andreas Kragler has nothing to do with it. But he is like, तुम्हारे लोग आ गए देखो, all these animals, this and that, whatever. And now what is happening? How are other people reacting to it? And by other people, you obviously have Kellner and all also. Andreas Kragler, ihre dunkle Kampagne, ihre Genossen, die in den Zeitungsvierteln brüllen und die Kraftpfeifen nach Mordenbrand riechen, Vieh, Stille तो ऐसे ही Vieh. Wer fragt, warum ihr Vieh seid? Ihr fresst Fleisch. Ihr müsst ausgetilgt werden. And now, who is responding to that? The Kellner. Von euch, die ihr euch fett gefressen habt. Murk, wo haben sie ihr Messer? वो तो क्या है, मतलब Murk is repeating this sentence if you have read this. उसको ही बोलता है तुम्हारा messer का है, etc. ठीक है, C.S. heraus, Marie mit dem Kellner auf ihn zu. Willst du still sein, Kellner? Das ist nicht menschlich, ein Vieh ist das. मतलब there is now a conflict between Kellner and Murk. Whereby Kellner obviously is क्या कहते हैं, because Balika is calling them Vieh, all that lot is मतलब एक तरीके से again conflating whoever is creating that Unruhe outside to all that the complete class, जो कि तुम्हारा Andreas Kragler belongs to that, and the Kellner and Marie also belong to that. So obviously Kellner has taken offense to that and saying कि कौन हमें खत्म करेगा, तुम लोग करोगे, तुम जिन्होंने मतलब खा के मोटे हो गए हो, फेट के फ्रेसन हाथ. ओके. एंड सिमिलर थिंग्स कि ये क्या कहते हैं, दरवाजे बंद करो, ये सब वो तो जो भी बोल रहा है, Fies das Murk macht die Gardine zu, Gespenster. Sollen wir in die Wand gestellt werden, die wir eigenhändig gemacht haben und hinter der ihr euch Kirschwasser in die Leiber schlagt. So you all see Feindlichkeit now in the Kellner also.
उनसो वाइटर, ठीक है। यहाँ पे क्रागल तो खैर अपना अलग रोना रो रहा है, मैं कोई गेस्पेंस नहीं हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ वो, एंड इधर कैलर इज टेकिंग ऑफेंस टू व्हाट बालिका एंड मुर्क आर सेइंग फॉर दीज पीपल, okay. Okay, so all that nasty thing conflict is going on here between मतलब टू डायमेंशनल तरीके से, मतलब टू डायमेंशनल but मल्टी डायमेंशनल तरीके से on the white. So you see clear वो कि Kenner and Murray are like they are rooting for Kragler to get his vibe. Not a very good way of saying this, and the other people retorting back, etc. क्या हो रहा है? मतलब you see by this time two happenings are have mixed together. एक आंद्रियास और आना की कहानी, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो, और एक जो बाहर उनरो हो रहा है पॉलिटिकल, उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो, यहाँ पर सब मिक्स मश हो गया. Who is responding to what becomes a little bit confused, and this is a strategy also, ठीक है. There is a clear thread inside और outside का, जहाँ पे अंदर लव स्टोरी की कहानी चल रही है और बाहर उनरो छिड़ने वाला है. अब जब छिड़ गया तो there is a mixture of all these conflicts, things coming together, ठीक है. Okay, फिर what happens after that? We can also say like there's Unruh outside as well as inside. हाँ, there is Unruh outside, मतलब inside तो पहले से था और Unruh बाहर भी था. That is the strategy used here. But what that they are also interconnected somehow. That is another thing that we are going to talk about later. कि what is the connection between this love story, Einerseits और Andererseits, these are Unruh जो बाहर है, ठीक है, और जो अब यहाँ पर मिक्स होगा. ओके, Yeah. ठीक है. आगे क्या होता है, बस इसको खत्म कर लेते हैं ये वाला पार्ट को. फिर क्या होता है यहाँ पर, फिर वापस आ गए मारी इसको सॉरी तुम्हारा मतलब a lot of things are said कि जो भी सब चल रहा है कि नहीं हाँ etc etc. In the end Then somebody the Kellner is talking to someone and telling someone हाँ, the that is an story. important part by the way. वो is था Nasrishman Zain. Right, fear and right. हाँ, तो जब ये हाना ये सब चीजें लड़ाइयाँ चल रही हैं, you have hast du die Stelle gefunden? Knock unten. ठीक है, तो यहाँ पे वो मना कर रही है, हाँ कर रही है, मना कर रही है, तो वो तो कहानी तुम्हें पता ही है. Yeah. Owen. ओवन चला गया ऊपर. मैम ये जो हाँ बोलो. the mixture of the Unruh है और stars for Fremdum's effect ही है. नहीं, अब what is Fremdum's effect इस केस में we'll discuss later, because यहाँ पे already दो कहानियां चल रही है ना, कि एक तो मेन कहानी तो is your love story between Kragler and Anna, ठीक है. But obviously this being not really an unpolitical, apolitical this is talking about something else through this love story. It's not really that love angle is not the main thing that is being talked about here, no. It's something else. So what something else is happening outside also. That conflict is happening outside. जो यहाँ पे भी चल रहा है वो वहाँ पे भी चल रहा है. उसका आपस में मतलब it's not simply Fremdum's effect. It's not ये मत सोचो कि जो बाहर हो रहा है वो simply एक strategy है for this story. You have to see कि यहाँ पे double story simultaneously चल रही है which are going to come together, and then you have this is a theme, ठीक है, this individual and collective वाला जो theme है तुम्हारा. अच्छा, जो बाहर अनरेस्ट चल रहा है वो पॉलिटिकल नहीं है. वो पॉलिटिकल है, लेकिन जो अंदर चल रहा है वो पॉलिटिकल थोड़ी है. अरे हाँ ठीक है. Aufstand is political. हाँ बोलो. और मैं पूछ रही थी, जैसे अभी आपने बोला कि दोनों के वो मिक्स हो रहे हैं दोनों Unruh, और ये एक स्ट्रैटेजी है. हाँ, this is a strategy कि यहाँ पे mishmash हो गया. This is a strategy of narration. This is a narrative strategy है ना एक तरीके से, कि अभी सिर्फ अंदर बात हो रही है, अभी बाहर कुछ चल रहा था नहीं चल रहा था पता नहीं, but there was this threat of Aufstand breaking out, Unruh breaking out. पर वो आउटसाइड था, अंदर कहानी इनकी चल रही है, मुर्क और क्रागलर की और आना की और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. एंड द मिनट इट मूव्स बियॉन्ड दैट, जैसे ही बाहर उनरुआ छिड़ते हैं ना, द कॉन्फ्लेशन हैपेंस. जब ये और दैट हैपेंस थ्रू बालिका ना, बालिका इज द वन हु इज सेइंग कि ये लो तुम्हारे कंपेनियंस आ गए, तुम्हारे कंपेनियंस ने ऐसा कर दिया. जबकि अभी देखा जाए इन रियलिटी आंद्रेयास
क्रैगलर तो काइजर के लिए लड़कर आया है ना, वर्ल्ड वॉर 1 से, ठीक है. ही इज नॉट द वन हु हैज इंस्टिगेटेड दिस आउटस्टैंड इन एनी वे, हाँ, बट थ्रू क्लास he is being attached to them by Balika who belongs to another class, ठीक है. तो ये तुम लोग ये लोग तो ऐसे, तुमने भी सुनी होंगी सब बातें, ये लोग तो ऐसी होती है, क्लास के लोग वो क्लास के लोग, ठीक है. तो वो कहानी जब शुरू हुई तो बाहर का उनरुआ और अंदर का उनरुआ एक तरीके से इनकी बातों से, बट ऑल्सो यू सी कि कभी बाहर की बात हो रही है, कभी अंदर की बात हो रही है, बातें क्या कर रहे हैं डायलॉग में, दैट डायलॉग में कंफ्यूजन आ गई है. दैट कंफ्यूजन, दैट मिशमाश इज अ स्ट्रेटजी to show कि किस तरीके से there is not really a Trennung zwischen dem Privaten und dem Politischen, ना. You get the point between the two, ठीक है. To say it to and to actually show it through narration, ठीक है. Those are two different. हाँ, and अब the third thing जो कि हम बात करें, जो is an important stellar, यहाँ पर जो कि इम नेबन से, this is I think